Hello students. So in the previous video we have started with exercise 3.3 and we have done till example number 6. So let's just start with example number 7, in which we are having a matrix A and is a symmetric matrix. We have to prove that that particular matrix is a symmetry. So what we are going to do, we just convert in, we are taking the transpose of that particular, और उसका आंसर अगर ये वापस से आता है then it is a symmetric matrix. 5 1 3. So what is the A dash? A dash is equals to column becomes rows and rows becomes columns. So it is 1 minus 1 5 minus 1 2 1 and 5 1 3. This is nothing but the value A. मतलब मैट्रिक्स A है. That's why hence A is a symmetric matrix. And similarly you can prove for the second one also that it is a skew symmetric. तो उसमें अगर आप उसको रोटेट करोगे, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालोगे, then the transpose will be minus A. Then it is a skew symmetric matrix. Okay. Now let's just move on to example number 8, in which we are having for the matrix A is equals to 1 6 5 7. Verify that first that A plus A dash is a symmetric. So what we are going to do, we have to find the value of A dash and then we are going to add. So A dash is equals to 1 5 6 and 7. So what is the value of A plus A dash? A plus A dash is 1 6 5 7 plus 1 5 6 and 7. Okay. So 1 plus 1, that is 2. 2. 5 plus 6 11. 6 plus 5 11. 7 plus 7 is 40. So ये हो गया हमारे पास A plus A dash. Now we have to prove that A plus A dash is a symmetric. So what we are having to do, इसका हम transpose find करेंगे. So we have to find the transpose of A plus A dash whole dash. A plus A dash whole dash is equals to क्या हो जाएगा, 2 11 11 14. So this is nothing but the value of A plus A dash. Yes. देखो मैंने क्या किया, सिर्फ रो को कॉलम में लिख दिया 2 11 and 11 14. So again this is equal to A plus A dash. Therefore we can say that A plus A dash is a symmetric matrix. And similarly we can prove for A minus A dash also. Okay. स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या करेंगे, A माइनस A डैश करेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, उसका आंसर हमें माइनस ऑफ A माइनस A डैश मिलना चाहिए. Then it is a skew symmetric matrix. Now move on to next example number 9, in which we are having find half of A plus A dash and half of A minus A dash when A is equals to 0 minus A minus B, A 0 minus C and B C 0. ओके. सो एक मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ, दूसरा आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो. ओके. सो A डैश क्या हो जाएगा इसका, A डैश विल बी 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. Okay. Now let's just find the half of A plus A dash is equals to half of bracket 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0 plus bracket 0 minus A minus B A 0 minus C B C 0. ओके. देखो
0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0. सो पूरा एडिशन क्या हो जाएगा 0 0 0. सो हाफ ऑफ is equals to half of bracket 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Therefore half of a plus a dash is equals to bracket 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, and similar way you can find the value of half of a minus a dash also. Now move on to next example number 10, in which express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so first is 3 1 5 minus 1. So let's just start. A is equals to 3 1 5 minus 1. So a dash is equals to 3 5 1 minus 1. Okay, so now we have to find a plus a dash. 3 1 5 minus 1 plus 3 1 5 minus 1. So 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 1 plus 5 6, minus 1 plus 1 minus 2. Okay, so now let p is equals to half of a plus a dash is equals to half of 6 6 6 minus 2. हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 3 minus 1. Now we have to find the value of p dash. p dash क्या हो जाएगा 3 3 3 minus 1. Therefore we are having this is equals to p. Therefore p dash is equals to p. Therefore p is equals to half of a plus a dash is a symmetric matrix. क्या हो जाएगा symmetric matrix. And now we are having to prove that it is a skew symmetric also. So what we are going to do, a minus a dash. Okay, a minus a dash करेंगे. So this is 3 1 5 minus 1 minus a dash 3 5 1 minus 1. So 3 minus 1, 3 minus 3 0, 5 minus 1 4, 1 minus 5 minus 4, minus 1 minus minus plus, minus 1 plus 1 that is 0. ठीक है. Now let small q is equals to half of a minus a dash is equals to क्या हो जाएगा half of bracket 0 minus 4 4 0 is equals to 0 2 minus 2 0. So what is the value of q dash? Q dash will be 0 minus 2 2 0. So माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 2 minus 2 0. This is nothing but the value minus q. Okay, therefore q is equals to 1 by 2 into bracket a minus a dash is a skew symmetric matrix. Okay, now similar way we are having 3 more examples like this. So एक मैंने 2 क्रॉस 2 का बता दिया, तो एक मैं 3 क्रॉस 3 का बता देती हूँ और बाकी के 2 आप खुद से कर सकते हो. So let's just take the second one. A is equals to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. So a dash is equals to क्या हो जाएगा a dash will be 6 minus 2 2
-2 3 -1 and 2 -1 3. Okay, so now what we are going to do, a plus a dash is equals to 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 plus 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3. So 6 plus 6 12, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, 6 plus 6 12, -2 -2 -4 2 plus 2 4, -2 -2 -4 3 plus 3 6 -1 -1 -2 2 plus 2 4 -1 -1 -2 and 3 plus 3 6. Now what we have to do, half multiply करेंगे. So half of, let p is equals to half of a plus a dash is equals to half of ब्रैकेट, क्या था हमारे पास वैल्यू, 12 minus 4 4 minus 4 6 minus 2 4 minus 2 6. ओके, सो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज़ 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. ये हो गया हमारे पास p. Now what is the value of p dash? Therefore p dash is equals to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, which is nothing but the value of p. Therefore p dash is equals to p. Therefore p is equals to half of a plus a dash is a symmetric matrix. Okay, now we have to prove a minus a dash. a minus a dash is equals to, a का वैल्यू है 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 minus 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. So 6 minus 6 0, minus 2 minus minus plus 2, this is again 0, 2 minus 2 0, सारी टर्म 0 हो जाएगी, सारी टर्म क्या हो जाएगी 0. ठीक है. नाउ q इज इक्वल्स टू, लेट q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a minus a dash is equals to half into bracket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 is equals to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. अभी हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें कि ना करें, हम ऐसे लिख सकते हैं. देयरफॉर q इज इक्वल्स टू माइनस q. देयरफॉर q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a minus a dash is skew symmetric matrix. ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद दो और दिए हैं, एक 3x3 है, एक 2x2 है, तो वो आप अपने हिसाब से खुद से कर लेना, सेम ही पैटर्न में करना है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11. इफ A and B are symmetric matrices of same order, AB minus BA is. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, सेम ऑर्डर दिया है. सेम ऑर्डर मीन्स 2x2 है तो 2x2 और 3x3 है तो 3x3. ठीक है. फिर हमें प्रूव करना है कि AB माइनस बी ए. सो AB माइनस बी ए उसका हम डैश करेंगे ट्रांसपोज, विच इज़ AB डैश माइनस BA डैश. ठीक है.
so a dash b dash minus b dash a dash. so as we can say that अगर सिमेट्रिक है दोनों, so a dash is equals to a and b dash is equals to b, which is ab minus ab और ba. ओके, अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो इट इज बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी. सो इट इज, वी कैन से दैट देयरफॉर ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक. क्वेश्चन का आंसर आएगा ए. Now our next is cos alpha. A is equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Therefore A dash क्या हो जाएगा? A dash will be cos alpha minus sin alpha cos alpha. Now we have to prove a plus a dash is equals to cos alpha sin alpha sin minus sin alpha cos alpha is equals to 1 0 0 1 is given, identity matrix is given. ओके, सॉरी यहाँ पे एडिशन करना है a डैश का भी, तो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ cos alpha माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. तो ये दोनों LHS है, दिस इज RHS. तो cos अल्फा दैट इज 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0 एंड 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1. नाउ वी कैन कंपेयर बिकॉज इट इज द सेम ऑर्डर. सो 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1. सो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2. तो cos का वैल्यू 1/2 कब होता है? व्हेन वी आर हैविंग अल्फा इज इक्वल्स टू π/3 cos π/3 विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू π/3. अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? π/3. सो आंसर नंबर बी. ओके, बी इज द आंसर. Here exercise 3.3 is completed. In the next video we are going to discuss about the operations which applied on matrices. Okay, that topic is most IMP because उसमें से बहुत सारे questions आते हैं in exam. Okay, so see you in the next video. Thank you.